Assalamu alaikum everyone and welcome back to another wonderful episode of the DSG Webinar series। और आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार है और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। क्योंकि आज जिस तरह आप सबको पता है कि इट इज़ द लास्ट वेबिनार ऑफ सीजन 3 बिफोर द ईयर 2023 एंड्स। और 2023 जो साल है इसमें हमने एज अ कंपनी एंड एज पीपल हमने काफ़ी लंबी जर्नी की, काफ़ी ग्रो किया। और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे पास जो गेस्ट हैं वो हमारे अपने ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, हु इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट डीएसजी एनर्जी, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। Assalamu alaikum, Assalam Islam. welcome कैसे to हैं the आप? webinar। Thank you very much for having me over today, Islam. Has been a wonderful year. Islam, can you hear me? So I think Islam is having some technical problems connecting back. So yes, absolutely, it's been a very wonderful year this time around. और बहुत सारे challenges रहे हैं साल के अंदर, और बहुत सारे challenges से आगे भी बढ़े हैं और बड़ा कुछ सीखा भी है इस साल में. So we've done a lot of projects this year और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, especially for myself and my team as well, and DSG Energy has grown as a company as well. So I believe this webinar is for a year in review. So we'll wait for Islam to come over. तब तक जो है, I'll keep you guys host and give you guys company. So like I said, it's been a wonderful year, and we have done a lot of projects this year. We're going to show you a few projects as well जो हमने इस साल में किए हैं. This is DSG Wrapped 2023, and we've accomplished around more than 300 megawatts of projects up till now, and ongoing a lot of projects as well. So just giving a flashback of the projects that we've done. We've taken on board some major clients and major industries like Sapphire. We've done projects with Nishat. We've done projects with Mahmood Group, and we've done projects with a lot of other new industries as well. Some new clients on board, and a lot more previous clients coming on board as well, expanding their horizons and moving into the greener technology. So I have a question here. Can you share the percentage growth of our company in overall capacity in terms of megawatts installed this year? So I believe as the last time, the year we closed, we grew around, I think was around 50 to 60%. We had growth as compared to our previous year. So Islam is back. I'll give the hosting back to Islam. जी सर, सॉरी वी हैड स्लाइट हिकअप विद द इंटरनेट। प्लीज कंटिन्यू जो आप बता रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि इस पिछले साल से हमने अभी तक जो है वो तकरीबन कोई एटलीस्ट 50-60% हमारी ग्रोथ रही है, both in terms of financial growth as well in terms of the technical the number of projects or the capacity that we've installed in Pakistan. And of course एक बहुत अच्छी introduction इस साल में ये भी हुई थी. There has been a lot more you could say improvements in technology, और जिसकी वजह से I think yield बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगी है as compared to the previous technologies. पहले पी टाइप मॉड्यूल्स आते थे, फिर आगे पी टाइप मोनोपर्क टाइप टेक्नोलॉजी आ गई, फिर मोनोफेशियल के साथ बाईफेशियल पैनल्स आने लग गए. नाउ वी हैव एन टाइप टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड, एंड इतना सब्सटैंशियल डिफरेंस जो है वो पहले कभी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में नहीं नजर आता था, बट इस साल जो है वो बहुत एक वाजे फर्क हम देख सकते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने इंस्टॉल की भी हैं as compared to the previous ones. N-type bifacial technology has by far been the best in terms of production this year. So in terms of technology, we've grown. In terms of the number of people in the company, we have grown. And in terms of the capacity installed, we have definitely grown this year as well. अच्छा नाइस। अच्छा तो सर हम अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें कंपेयर टू लास्ट ईयर इन 2023, हमारा जियोग्राफिकल फुटप्रिंट किस तरह से इंक्रीज हुआ है? हमने पाकिस्तान के कौन से रीजन्स में एक्सपैंड किया है? कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन सेटअप किए हैं या अपनी कंपनी की एक्सपेंशन की है जहाँ हम पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? So Islam, we have gone into पहले मैं कह सकता हूँ हमारी ऑपरेशन टीम जो है पूरे पाकिस्तान में थी, बट नाउ वी हैव प्रॉपर ऑफिसेज, सेल्स ऑफिसेज, एंड वी हैव स्टाफ डेडिकेटेड टू डिफरेंट सिटीज एज वेल. मेजर सिटीज की बात करें तो वी हैव एक्सपैंडेड इनटू कराची, व्हिच वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट ओपनिंग्स दिस ईयर,
And we already had an office in Sahiwal, in Multan. Then we expanded into Faisalabad. We expanded into Peshawar, into Islamabad, into Rawalpindi. Lahore, obviously, we already had an office. Then we had a dedicated office for residential solar projects in Lahore and in other cities as well. Our DHA office was specifically established for this case as well. And now we are planning to expand another office soon, coming up soon in Sheikhupura as well, because we have around more than 40 megawatts of installed capacity just in that region as well. So in terms of geographical footprint, I think we're all over Pakistan, Alhamdulillah. And I think बहुत कम पार्ट का ही है पाकिस्तान का जहां हमारी टीम ने अभी तक जाके एक्सपीरियंस नहीं लिया. But all types of roofs, any kind of terrain, all kinds of terrain that we worked in, हर तरह की छत के ऊपर काम किया हुआ है, हर तरह की जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम किया हुआ है. So in terms of geographical footprint, I think we're all over Pakistan, Alhamdulillah. अच्छा, that's very nice to hear. अच्छा, और काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है, वो कहते हैं कि while other companies are limiting themselves and shutting some of their offices down, DSG is opening offices all across Pakistan. So what is the secret recipe that DSG has? That is a lot of times the question that we get asked. I think इसमें secret recipe would only be I believe the hard work that our teams put in. हाँ, वो एक चीज जरूर है, एक एसेंस है डीएससी एनर्जी का और डीएससी एनर्जी में काम करने वाले लोगों का, दैट वी डोंट गिव अप. कि कोई प्रोजेक्ट का अगर पता चलता है तो वी मेक श्योर दैट वी गेट द प्रोजेक्ट और उसको जो है वो मॉडल ग्राउंड्स पे हम ले, मॉडल ग्राउंड्स पे उस पर काम करें, एंड वी जस्ट डोंट लेट थिंग्स गो ऑन दैट नोट. एक तो ये की एसेंस है जितने भी लोग हैं डीएससी एनर्जी में. दूसरा, एज फार एज द मैनेजमेंट एंड द विजन ऑफ द कंपनी इज कंसर्न, I think we have been building the company DSG Energy with a vision to sustain it. और सस्टेनेबिलिटी इसी चीज का नाम है कि हम सिस्टम्स बनाएं, उनके ऊपर काम करें, लोगों पे काम करें. वी पुट इन पीपल इन दैट सिस्टम एंड वी मेक श्योर कि हमारे प्रोसेसेस जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो, हमारी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग हो कि हमें किसी भी बुरे वक्त को गुजारने के लिए हमारे पास पहले से उसकी प्लानिंग हो. दिस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स. अभी रिसेंटली बहुत बहुत ज्यादा रिसेशन भी आया था, सोलर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी जब इंपोर्ट्स जो है वो बैन हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली वी वर आल्सो पार्ट, वी वर वेरी बैडली हिट इन दैट टाइम एज वेल. लेकिन उस टाइम पे भी हमें प्रोजेक्ट्स मिले, हमने सप्लाई चेन को हैंडल किया, मैनेज किया, चाहे वो लोकली किया या इंपोर्ट बेस के ऊपर किया, क्लाइंट्स के साथ मिलकर किया. हाउएवर वी डिड इट, वी मैनेज टू sail out of that storm and we managed to take the whole team with us out of that storm as well. So I believe it is the whole essence lies in the team itself as well, and the essence lies in the vision of our management as well. राइट राइट. और विजन की आपने बात की, तो एक और हमारा डीएसजी के का जो विजन है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हाइलाइट्स डालें कि इसमें इसमें हमारा क्या विजन है एम्प्लॉइज की ग्रोथ के हवाले से और इवन मैनेजमेंट की ग्रोथ के हवाले से. You and I have been to a training recently, Islam. I think both of us can say that this is absolutely something, a very basic thing that every organization should have, that learning should never stop, regardless of the fact कि आपके 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, 20 साल का है. So the learning can be anywhere, in any place, in any form. And as far as our organization is concerned, we've had a lot of internal trainings as well, or a lot of external trainings as well. हमारे अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं जिसमें हमने लोगों के ऊपर जो है वो काम किया है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया है. एंड वी मेड श्योर कि जिसको जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जिस फील्ड में काम करें, उस फील्ड से उनको जरूर वो ट्रेनिंग. वी ऑल्सो गिवन एन एसेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एंड अदर वर्किंग्स एज वेल. जिस तरह से इंजीनियर्स को फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी हैं, सेल्स वालों को फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स दी हैं, इसी तरह से फाइनेंशियल वालों को जो है वो टेक्निकल थोड़ी ट्रेनिंग्स दी हैं, सो दैट दे गेट टू नो about the technical aspects of the projects that we are doing as well. क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जो हैं वो एक चीज का पार्ट होते हैं. एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दैट कॉग इन व्हील, जिसमें हम सारे जो हैं वो एक ही मशीनरी का पार्ट हैं. So we had a lot of trainings and we've gone to different universities as well. यूनिवर्सिटीज में जाके भी हमने ट्रेनिंग्स दी हैं और हमने इस चीज को भी कोशिश की है कि हम इंटरनल ट्रेनिंग्स तो रखें ही सही, लेकिन वी साइंड अ लॉट ऑफ एमओयूज विद our established universities as well, jahan we have given trainings to students and we have started a lot more programs for students as well. jahan incubation centers bhi hain aur bahut sare programs bhi aise start kiye hain जिससे students को फायदा होता है on learning, having more grasp or more practical knowledge towards the solar industry in Pakistan. Right. So while we have expanded in a lot of regions, mashallah, like Karachi and Sahiwal, Islamabad, Multan in this year,
So what are the jobs that we have created? ये भी एक contribution है मैं समझता हूँ towards the country and towards the society जो हम कर रहे हैं. By growing our own company we're also creating a lot of jobs. तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप अपने ख्यालात का इज़हार करें. देखिए, इस चीज़ का इस्लाम में आई थिंक पूरा 100% क्रेडिट तो हमारे अपने कस्टमर्स को देता हूँ, जिन्होंने डीएससी एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट किया है, जिन्होंने हमारी कैपेबिलिटीज़ पे, हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस पे, हमारी सर्विसेज के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया है. बिकॉज आवर क्लाइंट्स आर आर ट्रेजर राइट नाउ. और उन्हीं को मैं कहूँगा कि जिस तरह से हमें प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं, उसी तरह से हमने अपनी टीम्स भी एक्सपैंड की हैं. सो अगर हम पहले, यू एंड आई बोथ नो दैट, अगर हम पहले किसी एक टाइम पे अगर कोई 20 या 25 प्रोजेक्ट्स जो है पैरेलल में कर रहे होते हैं, नाउ द डैशबोर्ड हैज मोर देन 50-60 प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल एट अ गिवन टाइम. And like we said in our previous conversation as well, jahan we have grown across Pakistan, or geographically we placed all across Pakistan. So we have projects all over Pakistan. So managing the supply chain obviously requires a lot more people on board. Making sure that timely delivery of projects is done also requires a lot of people, a lot of manpower. And due to that, we have expanded, I think, not a trifold, but almost like 200% based on the number of people that we are hired. And Alhamdulillah, as far as the last week's figure, I believe we have around 500 plus people who we have employed both directly and indirectly. So ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको साइट्स पे हमने काम करना सिखाया है. टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, हेल्पर्स हैं. वो साइट हैं जो लोग एक्चुअल साइट पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं. पीपल लाइक सुपरवाइजर्स, electricians, technicians, helpers, even engineers as well. Civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers. We have hired people in our offices as well, who are executives and who are based on in the office जो design के ऊपर काम करते हैं. वही उसी तरह के electrical engineers हैं जो sites के ऊपर जाके काम करते हैं. Civil mechanical engineers for structures and construction. So I think we have grown around at least twice our size since last year, most probably. So whenever a project starts in a region, a large industrial project like 1 megawatt or 4 or 5 megawatts, which we've been doing for the past year, it creates a holistic impact on not only the industry we're working in, but also in the region. So, what are the community impacts that occur when we are operating in a region? For example, in a very rural area where we hire local resources as well, where we ultimately somehow build the infrastructure as well and pave the way for further industrification as well. मैंने इस्लाम इसका ना प्रैक्टिकली चीज ना होते हुए देखी है पाकिस्तान में. एंड इट गोज बैक टू द कायदान सोलर पार्क जब पहले 2013-14 में इंस्टॉल हुआ था. एंड भावलपुर में आई हैड अ रीसेंट विजिट टू भावलपुर. एंड वहां मैंने देखा था कि हर जगह पे ना छोटा नहीं तो कहीं ना कहीं सोलर पैनल जो है लगा होता था. चाहे वो किसी छोटी सी पान शॉप पे या किसी किराना स्टोर पे लगा हो, या इवन मैंने काफी जगहों पे जो है रेडी वालों को भी देखा है कि वो सोलर पैनल एक छोटा सा लगा होता है, उसके बाद बैटरी लगी होती है और वो जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी उस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं. सो आई हैड द चांस टू टॉक टू वन ऑफ दोस पीपल. और उसमें मैंने ये भी देखा था कि लोगों को ना जब भी कहीं सोलर पावर प्लांट इस तरह की कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नजर आती है तो पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अडॉप्टिंग इट एज वेल. So we've done projects in urban areas, in rural areas, and I believe कि अब इस चीज का ना ट्रेंड ज्यादातर जो है वो अर्बन एरियाज में और हर तरह की जगह के ऊपर जो बहुत ज्यादा आते जा रहा है कि जिस मर्जी तरह का सोलर पैनल हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे 100 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं, चाहे 200 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं. डीसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोग शिफ्ट होने लगे इन रूरल एरिया एज वेल. वहाँ एक लाइट और एक फैन जो है वो सोलर पैनल के साथ रख के चला रहे होते हैं. सो obviously it has an impact on the communities, and as far as I've seen, it has had a very positive impact as well on people's lives as well. अगर हम इवन एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर की अगर बात करते हैं तो घरों में जो सोलर सिस्टम्स लगते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. ये वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं जिनके घर पे सोलर लगा हुआ है और नेट भी हुआ हुआ है. So obviously it impacts communities, and the savings that they have, they obviously put it somewhere else and somewhere other than electricity bills, and obviously that goes into a very productive aspect, चाहे वो रेजिडेंशियल साइड पे हो, चाहे वो किसी रूरल एरिया में हो या सिटी के अंदर हो या रूरल एरिया में, it definitely has a very good impact. Right. अच्छा sir, moving on to specifically the work that we do.
Now, what are the customer satisfaction methods that we have adopted throughout the year, and what are the improvements that we've put in? और कोई सक्सेस स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहें यहाँ पे? आई थिंक इस्लाम कस्टमर सेटिस्फैक्शन का डीएसजी एनर्जी के साथ सबसे बड़ा आई थिंक एस्पेक्ट ये होगा कि दैट वी हैव हमारे नए क्लाइंट्स जो इस साल आए हैं उनकी रेशियो एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लाइंट्स इज लेसर, यानी कि हमारे पास पुराने क्लाइंट्स जो हैं वो वापस दोबारा ज्यादा आए हैं. पीपल हु हैव एक्सपैंडेड द सोलर पावर प्लांट्स. अगर कोई इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो किसी ने अगर 1 मेगावाट लगाया, उन्हें 2 या 3 या 4 मेगावाट पे जो है वो आगे एक्सटेंड किया है. इसी तरह से मैं अगर रेजिडेंशियल कस्टमर्स की बात करूं तो वी हैव हैड अ लॉट ऑफ रेफरल्स एज वेल सिंस लास्ट ईयर. पिछले साल अगर जैसे हमारे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ रेजिडेंशियल कस्टमर्स थे, उन्हीं से आगे हमारे पास ज्यादातर रेफरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आना शुरू हैं. सो ऑब्वियसली दिस itself is a success story, getting recurring orders from clients. और उसके बाद फिर और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैं. Like I said in the beginning of this session as well, we've had to we've gone through a lot of new projects as well. बहुत कुछ सीखने को मिला है, बड़ा काम किया, हमारी टीम्स ने बहुत ज्यादा जान मारी, बहुत ज्यादा काम किया, we rewarded them accordingly as well. So there have been a lot of testimonials from customers as well, industrial, residential, both. We can look at our website and Facebook and YouTube page as well. So people definitely have had very good experiences with DSG Energy. Alhamdulillah for that. And I believe we have grown as a company as well into that. So customer satisfaction की जब हम बात करते हैं, so I believe Islam, do you have our portfolio in hand? Can you show some of our recent projects that we've done? Yes, sure. I can incorporate that. Just give me a second. So a glimpse of some of the projects that we've done, so that we can put pictures to words. So yeah, this is 25 megawatts. The bottom right project that we see here is a 6 megawatt project, and this is all based on N-type bifacial technology. Moving on, this is again Mahmood Group in Multan. Like you said, regarding orders, yes, we started with the first megawatt was installed here. Now it's up to 25 megawatts. Again, Sapphire was 5.1 megawatts. Now we are going for another apparently 5.1 megawatt project with Sapphire Textile Mills. These are two sites, a 4 megawatt and a 1 megawatt project. So they've given us a recurring order, and it's with the same Sapphire management as well. Moving on. So we've done a lot of projects with Rumi Group. Masood Rumi again is another example of customer satisfaction. I believe यहाँ भी पहले megawatt भी हमने लगाया था और 14th megawatt भी हमने लगाया था. We're expanding onto like 6 to 7 more megawatts in the same company. So this is Diamond Fabrics. Again, there's an extension here as well, and we have started working on it as well. So you can just skim through the projects. जी. So we've done a lot more projects. Rice mills में rice sector में हमने बहुत ज़्यादा recently काम किया है. We've helped industries go on to LEED certifications. We've done some of the very hard projects that are in solar dome shells पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है. So these are just some of the glimpses of the projects that we've completed this year. And I am very, very successful team who has put in a lot of hard work and a lot of efforts in all of these projects. Right. So, sir, one more thing when it comes to customer satisfaction, a very important question is that how do we integrate customer feedback into our services? Because I have seen and witnessed at DSG that whatever the customer demands or whatever the customer needs at the end of the project, even if it was not part of the is disconnected again, but I do see the question, Islam, so I'm just going to go ahead and answer it. So in what ways do we incorporate customer feedback to improve our services? Islam is back. So Islam, I'm sorry it took over your question, and I believe the question is to how do we incorporate customer feedback into improving our services, right? Right. बिल्कुल यही question. So I believe हमने मैं क्योंकि खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो जो है वो उस चीज़ों से बाज नहीं आते, दिमाग उसी तरह से एग्जैक्टली चलता है. तो हमारे एक ना व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्टिकुलरली जब पढ़ते थे, तो उसमें ना एक सब्जेक्ट होता था एम्पलीफायर्स का. सो उसमें एक आता था इनपुट होता था, और उसके बाद एक हमारा ट्रांजिस्टर होता था व्हिच एक्चुअली वाज द प्रोसेसर, एंड देयर वाज एन आउटपुट, एंड दिस यूज्ड टू बी नोन एज एन ओपन लूप सिस्टम, एंड देन देयर वाज अ क्लोज लूप सिस्टम.
क्योंकि अल्लाह जो है वो हमारे एक टीचर है कर्नल जिया साहब सर, इफ यू आर लुकिंग एंड इफ यू आर सीइंग दिस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल that you have done for all the students in electrical engineering at UCP. So एक closed loop feedback जो है वो बहुत important होता है किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे, किसी भी दुनिया में, in any kind of work that we are doing. Anything which does not have a feedback does not sustain itself. So whenever we talk about feedback, whether that is core electronics या हम एक practical life की बात कर रहे हो, feedback के बगैर जो है वो improvement in services जो है वो नामुमकिन है. So obviously we've taken a lot of feedback from our customers as well. We've taken feedbacks from our clients, both industrial and residential. लोगों की हमने जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कमीशन करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो या चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, वी एंश्योर दैट वी गेट अ फीडबैक improvement जो है एक process है, and we make sure that we go through that continuous improvement process in our services through regular feedback from our customers, whether those that is again industrial or residential for that matter. If you can hear me now, if you can hear me now, sir, I guess we're having a lot of internet problems today. बिल्कुल है जी. इस्लाम, व्हाट्स द क्वेश्चन? अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था वो ये था कि हमने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स इस साल चलाई हैं जिनमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी आती हैं. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हमने और ऐसे सेक्टर्स इंटीग्रेट किए हैं सोलर के अंदर जिनमें पहले एक भी इंडस्ट्री सोलर पर नहीं थी. तो उन कैंपेन्स की इम्पोर्टेंस और उनकी सक्सेस के ऊपर थोड़ी सी आप बात करेंगे, वो किस तरह से हमारी रही है, क्या एक्सपीरियंस रहा है और आगे फ्यूचर में उसके क्या प्लान है. Islam, is this the campaigns for solarization या आप वो public awareness और education की बात कर रहे हैं? I'm talking about public awareness and education, which ultimately leads to solarization. अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए आई थिंक वीव जो हमारा एक सबसे बड़ा स्टेप था वो दोज आर एमओयूज विद मेजर ऑफ आवर universities in both in Lahore and in major cities, even in Islamabad and Karachi. So we signed MOUs with the educationist people who actually train kids or train students to become professionals in later on in their lives. So we've gone to the grassroots level जहाँ हमें लगता है कि जिस point पे आगे जो है वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट दे जब एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आके कदम रखें तो उस टाइम पे जो है वो फुली ट्रेन्ड हो, वेल इक्विप्ड हो to understand all the issues or the problems that the industry faces and how to solve and overcome those problems. जब तक एक कोर नॉलेज नहीं होती तब तक जो है वो उस पे कोई काम नहीं हो सकता. So you can go onto our website as well and YouTube links. Again, we have done a lot of MOUs with यूनिवर्सिटी जिसमें हमने खास करके टीचर्स को भी हमने इनवाइट किया है. वी हैव प्रोग्राम्स सच एज ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जिसमें हम टीचर्स को भी इस चीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द नीड्स फॉर आवर इंडस्ट्री, फॉर द सोलर इंडस्ट्री करंटली इन पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर और किस किस चीज़ों की इन पर्टिकुलर जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है जिससे आके वो एक एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में आए. So they don't have to go through rigorous kind of internship programs या training programs या उस तरह से 5-6 महीने आके जो है वो अपना टाइम और कंपनी का टाइम जो है वो लगाएं उससे पहले कि वो एजुकेशन में ही सारा कुछ जो है वो सीख के आए. Obviously, then we've done a lot of public awareness campaigns as well. Our marketing team is all on board for it, and for the public awareness, I think सबसे बड़ा जो इशू है इन सोशल इशू या आप कह लें एनवायरमेंटल इशू पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली आजकल जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है, फॉग तो है ही लेकिन साथ स्मॉग बहुत ज़्यादा है. सो इट इज़ अफेक्टिंग हेल्थ एंड इट इज़ अफेक्टिंग लाइव्स. एंड अगर हम ये नोट भी करें इवन पाकिस्तान में, अगर आप आजकल इफ़ यू ट्रैवल टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एरियाज, ये वो ऐसा सीज़न होता है जहाँ वो कहते हैं यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ठंड पड़ रही होगी.
overall in Pakistan. But even in these days, even if you go out, even if you are in Lahore or in Punjab, in any place, आपको ना वो ठंड का उतना impact नहीं मिलता. So you can actually see or actually feel in practical global warming का एक ना बहुत बड़ा impact है. And again, Pakistan is one of the worst hit countries in the world when it comes to global warming. So इसकी पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी बड़ा कुछ हमने इस साल किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी एजुकेटेड स्टूडेंट्स एज वेल. वी गॉन at least we've done around 20 plus trainings in Pakistan this year only, जिसमें हमने public awareness और education about solar energy and how exactly does solar energy work, entrepreneurship and इस तरह के topics के ऊपर हमने बहुत सारे campaigns किए. Right, right. So, sir, as the year is ending, could you provide a glimpse or a sneak peek into the company's future plans and initiatives that we have? इस्लाम कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जो भी मैं नहीं बता सकता, but definitely there are a lot more future plans for DSG Energy and the kind of work, and we are expanding into new horizons as well. Everybody will definitely see a big change coming up in with DSG Energy. See something very positive coming up on that note as well. As far as the company is concerned and the impact of the past year is concerned, I think we've done very fairly well in the industry. We've taken a considerable amount of business from the solar sector, and we believe that we have grown into a more sustainable form of DSG Energy, which was back in 22 and now in 23 and going on to in 24. So we have a lot of new plans, introducing new technology in the coming year, and introducing something very exciting for our own employees as well, inshallah, in the coming years, and not so far, but in the next quarter, hopefully. Right. So, sir, since our time for the webinar is ending, would you like to convey any concluding message to all the audience, to the company employees, to all the people who are watching? सो जिस तरह से मैंने बताया कि हमने पूरा साल जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पूरे पाकिस्तान में किए हैं, और वी वी हैव मैनेज टू टेक ऑन बोर्ड एटलीस्ट 50% ऑफ आवर HR which was human resource which was last year, और इस साल जो है अभी currently जो है we are employing more than 500 people, both direct and indirect. So I think we have done our fair share into the industry, and we definitely, as far as the industry is and feedback is concerned from the industry as well, we've raised the standards, we've raised the bar higher for everybody else to achieve as well. And we've also harmonized with a lot of the other a lot of the people in the solar community as well, जिनको कहते हैं कि जी पूरी सोसाइटी है पोलर्स, पूरी सोलर कम्युनिटी को हमने साथ लेके चलना चाहिए. सो वी अटेंडेड सेमिनार्स ऑल ओवर पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी हम जो है वो हमने देखा है. So there are a lot more good things for coming up for people who are working at DSG Energy, inshallah. Very soon we have expansions in mind as well for 2024, and inshallah 2024 will be the year of growth for not only for the company, but everybody working in the company and everybody associated with DSG Energy, even our customers and clients, inshallah, as well. Inshallah. So, Sazan, thank you so much for joining us today. And with this note, I'd like to conclude the webinars for 2023. And I wish all the audience a very, very happy new year. And I would request all of you to stay tuned for our next series. And we also have some very amazing things coming up when it comes to webinars and DSG talks. And we have some amazing plans for the next year as well. So stay tuned and take care. Thank you very much.